Hello everyone, in today's video we will learn how can we code Fibonacci series in Python. तो किसी को अगर Fibonacci series अगर नहीं पता है तो Fibonacci series is basically the addition of the preceding two numbers of a list. So एक जो list which always starts with 0 and 1 and the next number is always decided basically on the sum of the last two numbers, preceding two numbers. So right now if we will see हमारे पास 1 है एंड 0 है, द बोथ का दोनों का एडिशन करके वी विल ऑलवेज गेट 1. Then the next number will be decided 1 plus 1 because this is the last two numbers now in the list, so it will be now 2. If we will go ahead like this, now it will be 3, then 5, 8, then 13, then it is 21, then 34. So ऐसे हम इस सीरीज को बनाते हैं. So let's say we want to get this as an output which I have commented just right now here. हमको ये सीरीज़ फिबोनाची सीरीज़ बनानी है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं. The first thing is basically using the for loop, and this next we can also use while loop. तो हम इस वीडियो में दोनों तरीके से फिबोनाची सीरीज़ को बनाएंगे और देखेंगे कैसे कर सकते हैं. अगर अब हमको फॉर लूप के अंदर ये बनाना है, सो व्हाट वी विल हैव टू डू, एंड वी ऑलवेज नो कि लिस्ट के अंदर 0 एंड 1 हमेशा इसी से स्टार्ट होगा फिबोनाची सीरीज. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक अ list equals to list, we'll make a list, then we will also make come till here, we'll ask for a user input, let's say here number integer which will be, and it will be taking the input user input. Please enter till enter the number of sequence for series to be for series. Let's do this, and then what we are going to do, we are going to start our for loop for I in range. So we will start it from 0 till number. Okay, so now we know we need to add 0 and 1. So what we will do, we will put a where condition here, that if I equals to 0 or I equals to 1, then we need to append it into the list. Okay, so we will append I here. If let's say it is not now 0 or 1, what do we need to do? So let's do one thing, I'll print here just lines another and comma I, just to explain till what part we have completed this. So list, we are going to print the list at the last. Let's say now I am giving it till 10 and run it. Okay, what it is printing, please enter the number of sequence for the series another. So we have printed here, we have given the input 10. After this what has printed is basically another 2 which is printed here. So इसने LST के अंदर में 0 and 1 put कर दिया है, लिस्ट के अंदर में 0 and 1 are here, we can see finally. Now we need to, ये हमने फॉर लूप इसलिए यूज़ किया है फॉर लूप में जो हमने ये 10 दिया है, इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ. आई वॉन्ट कि ये जो इट्रेशन हो 0 1 1 2 3 5 8, ये 10 नंबर्स तक हो, नॉट टिल डिजिट 10 बट 10 इट्रेशंस तक चले. जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 5 8 13 21 34, तो ये कितना है? सो दिस इज़ 10 बेसिकली. सो 10 इटरेशन तक. अगर मैं इसको 11 देता हूँ तो ये 21 और 34 को प्लस करके विच इज़ बेसिकली 55, ये मेरे को 55 के साथ में देगा अगर मैं 11 देता हूँ तो. सो आई वॉन्ट इट लाइक दैट. इन द वाइल लूप व्हेन वी विल डू इट, वाइल लूप में हम करेंगे कि किस नंबर तक चाहिए. लेट्स से 1000 आई गिव, तो 1000 के पहले वाले तक फिबोनाची नंबर देगा विच इज़ बेसिकली 987. तो ये वाइल लूप में हम करेंगे कि 987 तक नंबर आए, उसके ऊपर तक प्रिंट नहीं करें.
So right now we have inserted 0 and 1 in list. Now what do we need to do? We need to add here, what we'll do, lst dot append. What we will append here is basically lst in length of lst minus 1, and then we will do plus lst. I'll explain what I am writing here, what it will do basically, of lst minus 2. So let me take this code which I have written here, what I am doing and how the logic we have written to insert the data. So what we are doing basically, we are taking the lst now. If the I is not 0 or 1, then we are for sure it is 2. Then we are going it for like length lst, and then we have given, we are going to give the index. Basically we are going to get the index, what data we need to put it into it. So what we are doing basically here, lst of length of lst minus 1. Okay, so this is doing basically ki lst, which is right now, let's say for the first iteration 0 comma 1. Okay, it is taking its length, so it is coming right now, the length will be 2. Correct, the length is 2. So what we are doing, 2 minus 1, because we know the indexing happens here 0 comma 1. So this is 0th index and this is first index, this one. Therefore we are uh, doing the subtraction of one index from here, length of list, which is basically 2 minus 1. So what we are getting, lst of length of list minus 1, we will get the value 1. Now we want to add this preceding number, so what we are going, length of list minus 2, so we will get 1 and 0. So we are printing it here, doing the addition here, and we are appending that value into the list. Let me run it again. Where is it? Okay, let me do one more thing. I will write here a print statement. Okay, so now we got the uh, Fibonacci series basically till value 10. If we now want, we can do it for 15 values also, one, and we will get it, the Fibonacci series till the 15th value. 350, 377 is the 15th one. Now this is when we wanted it to be for a number of sequence. Now we are going to do this, all these things with the help of while loop, where what we will need is basically कि किस नंबर तक हमको प्रिंट करना है, कि जस्ट लाइक आई गिव द एग्जांपल कि हमको 1000 तक प्रिंट करना है, तो 1000 के पहले तक का फिबोनाची सीरीज में नंबर प्रिंट हो जाएगा. So how we are going to do, we are going to make, let the list be here, the number let be also here, and we are going to give one more variable here, iteration. Let's say iteration equals to true, while iteration. Okay, what we are going to do, if length of lst equals to 0, then lst dot append 0, and if length of lst equals to 1, then we will append list dot append 1. Now what do we need? Now we will go into the else part, which is basically what we have done right now, कि हमने अभी जैसे कि for loop में किया था 0 और 1 के लिए, सेम टू सेम हमने while loop में भी किया है, कि अगर लेंथ ऑफ अपना लिस्ट अभी 0 है तो वी नीड टू ऐड 0, अदरवाइज वी नीड टू ऐड 1. देन अगर 0 और 1 नहीं है, so now what we need to do, the same thing which we were doing here. So I'll just copy this thing, because this is exactly same which we are going to do here as well. Now एक चीज़ और, कि ये चीज़ रुकेगा कब. So what we need to do, if length, sorry, if this thing, the number which we have appended this right now, is greater than number which we got into our input,
कि अब मैं चाहता हूँ 1500 तक प्रिंट हो सारे फिबोनाची। तो हम ये भी चेक लगाने कि इटरेशन बंद कब करना है। तो इटरेशन तब बंद होगा अगर ये जो हमने लास्ट अपेंड किया है वो 1500 से बड़ा है, देन व्हाट वी विल डू, iteration equals to false, we will put iteration equals to false. This needs to be capital T, and let's print now the list. Let me get the print here. देखिए अभी मैंने 1500 तक दिया तो इसने मेरे को यहाँ पे 987 तक लेके आया, बिकॉज 987 प्लस 610 करेंगे तो दैट विल एक्सीड नाउ। therefore if I will give 15,000, let's say, what will happen, तो यहाँ पे इतने 10,946 तक लेके आया। तो ये फिबोनाची सीरीज़ में हमने दोनों तरीके से देखा कि हम कैसे फिबोनाची सीरीज़ कर सकते हैं यूज़र से इनपुट लेके, कितने इटरेशन तक करना है या फिर कौन से नंबर तक हमको अचीव करना है फिबोनाची सीरीज़, जिसमें हमने वाइल लूप और फॉर लूप का यूज़ किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रैक्टिकली, और अगली बार आप खुद इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे विदाउट एनी डिफरेंसेस एंड लॉजिकली थिंकिंग कि क्या क्या हमको इंसर्ट करना है। थैंक यू।